Sir, I can hear. Oh. Okay. So, good evening, guys. I am Sumit Nahak. I had secured All India rank 691 in NEET 2021, and I'm pursuing MBBS in AIIMS Bhubaneswar. So today I'll be teaching you physics. I have taken few of your doubts, and today we will be seeing all of your doubts. And in between, you can ask if you have any queries, and I will try to teach you the topic in a very simplified manner. Okay. So I have taken the questions. Along with that, I have taken answers from NCERT book, because if you are preparing for competitive exam, NCERT is the prime book you need to focus on. So मैंने NCERT से answers लिए हुए, but I would request you to focus on the right side of my screen, because here I will be teaching you the topic in my own way and in a very simplified manner. Okay. So आप लोग focus right side पे कीजिए. Left side पे only I have written the questions and answers, but you need not worry about. Focus on the right side of the screen. Okay. So let's start today's session. What is the difference between elastic and inelastic collision? So first, collision. What do you mean by collision? Collision matlab when two bodies strike with each other. When two bodies, if this is a body A and this is a body B, when two bodies strike with each other and they exert, if body A is moving with a velocity VA and body B is moving with a velocity VB, this is before collision. So what does collision mean? When two bodies strike with each other and they exert large force on each other, this is known as collision. Okay. So, and if VA is greater than VB, so VA will collide with VB. This is the time of collision when they exerted large force on each other. This is during collision. And after the collision, the velocity of both the objects will change. Why it will change? Because object A had larger velocity than the object B. So object A will put more force on object B. Then it will get, see, if object A is putting force A on object B, and object FB is putting force on object A, that is FB, obviously here FA will be greater than FB, because A is moving with the same larger velocity. Okay. So after the collision, what will happen? Let's assume this is UA. Initial was U. If after the collision, object A is moving with VA velocity and after B is moving with a velocity VB, you will see after the collision, VB will be greater than VA. Velocity of B increases because of the collision. This is the collision. Collision means when two bodies put some force on each other. Okay. So collision definition, I think I have made it very clear. Then collision types, elastic and inelastic collision. What is elastic collision and what is inelastic collision? Elastic collision क्या है और inelastic collision क्या है? Elastic collision मतलब the collision where no kinetic energy is lost. For example, a collision का example ले लो. If you drop the ball from the height, now this will be a little difficult example. I'll give this example later. First, see, if a object is moved A and object is B, they were moving with some velocity U and UB, and after the collision, A is moving with a velocity of VA and B is moving with a velocity VB, and the kinetic energy initial combined both the bodies A and B, if it is equal to the kinetic energy final, then it will be a elastic collision, guys. So elastic collision मतलब जितना उसका kinetic energy initially था, even after the collision, this is before collision and this is after collision, even after the collision, the kinetic energy, if it doesn't change, that is known as elastic collision. Okay. So elastic collision का एक example, एक best example क्या होगा? If there was a ball
and if you drop the ball from an height h, okay, it was moving with a velocity v. If it bounced back to the same height, if it bounced back to the same height, what does that mean? That means it had no, it didn't lose any energy through kinetic. मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ लूज ही नहीं हुआ. जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था उतने ही काइनेटिक एनर्जी फाइनली भी था. मतलब v वेलोसिटी से नीचे आया और v वेलोसिटी से ही ऊपर गया, इसीलिए सेम हाइट तक जा पा रहे. ओके, दिस इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन, जहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा. देन व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन? इनइलास्टिक completely opposite, where you will see a loss of kinetic energy is seen. That is known as inelastic collision. For example, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से नीचे फेंकते हो और ये हाइट h पे था, कभी भी देखोगे जब ये बाउंस बैक होगा ये उतने हाइट पे फिर से नहीं जाएगा, मतलब यहां तक जाएगा. If ये h1 था ये h2 will be smaller than h1. क्यों ये हो रहा है? Because it lost some of its energy as kinetic energy. उतना उसको वेलोसिटी नहीं मिला जब फाइनली वो बाउंस बैक कर रहा है. ओके, सो इट विल बी इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, इलास्टिक कोलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इनइलास्टिक कोलिजन मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन. दोनों में प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन: no kinetic energy is lost. No kinetic energy is lost. Second point, momentum is conserved. No kinetic energy loss, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं half ma ua square plus half mb ub square is equal to half ma va square plus half mb vb square. Okay, then momentum is conserved. Momentum is always conserved and total energy is conserved. Here, these are the three properties of elastic collision. Then inelastic collision में properties क्या होगा? Properties of inelastic collision. Here also momentum is conserved. But kinetic energy is not conserved. But kinetic energy is not conserved. But total energy is conserved, because the amount of kinetic energy that is lost in the process, that is lost in the collision, that gets converted into potential energy or sound energy or light energy to some other form of energy. Okay, energy is never created and never destroyed. So total energy is always conserved. Okay, so I hope I have made it clear what is the difference between elastic and inelastic collision. So और भी एक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. अगर उसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, perfectly inelastic collision क्या होता है? If a body B initially is at rest and if a body A is moving with a velocity ua, after the collision what happens is both the bodies join with each other, and move with a common velocity v. Okay, that is known as perfectly inelastic collision. Inelastic है मतलब यहाँ पे भी kinetic energy loss हो रहा है. Okay, so this is known as perfectly inelastic collision. So if you are reading the book, you will learn how to find the final velocity, in elastic collision. See, यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गया और एक मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इसका मतलब एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. ये दो इक्वेशन से हम इसको फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी ए एंड वी बी. यू ए यू बी एंड मास के टर्म्स पे आएगा, and you have to remember that formula because questions are asked from the formula. Okay, so this is the basic difference between elastic and inelastic collision.
So I hope I have made it clear. So moving to the next question. What is the next question? Next question is, how do you calculate the gravitational force between two objects using Newton's law of universal gravitation? Okay. So हमें क्या calculate करना है? Gravitational force between two objects. Two objects के between gravitational force क्या होता है? So if you guys don't know properly, first I would like to say, if you are seeing any object now, currently you are sitting on your table or on a chair. Mind it, guys, you have a gravitational force, you have a gravitational attraction between you and your table. Okay, you are not feeling any force. That doesn't mean you don't have any force of attraction between you two. In the entire universe, all the objects, any object you see, they if any object you see, all the objects have a gravitational attraction, a gravitational force between them. Okay, that is what Newton's gravitational motion says. Okay, if I'll go through the exact lines, every particle in the universe attracts every other particle with a force, which is direct. I'll teach you that later. First, you remember this. Every particle in the universe attracts every other particle with a force. Okay. So what Newton's gravitational motion says, the force, the gravitational force which exists between two objects, that is directly proportional to the of mass of their product of their masses. If these are the two objects m1 and m2, and if Fg is the force of attraction between them, this force of gravitation will be directly proportional to product of their masses. And if the distance between them is r, for example, the same Newton's law of gravitation says, Newton's law of gravitation ही बोलता है. Says force is directly proportional to product of their masses, and the same force is inversely proportional to the square of their distance. If the distance between them is r, Fg is inversely proportional to the square of their distance. Okay, so हम लोगों को दो equation मिल गया. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so Fg is proportional to m1 and m2. So Fg is proportional to m1 into m2 upon r square. So ये proportional हटाने के लिए, you guys know that to remove the proportionality sign, we add a constant. We add a constant to every equation. So the constant here we will be adding is capital G. So Fg is equal to capital G m1 m2 upon r square. So this is the formula, guys. Fg is equal to G m1 m2 by r square. So capital G का value क्या है? What is the value of capital G? Value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 13 Newton meter square kg inverse square. Okay, ये G का value 6.67 into 10 to the power minus 13. Okay, so initially I told a force exists between you and the table. You and the table you are sitting next to. So why don't you feel that force? Because see, force is equal to G m1 m2 into r square. This force is equal to. So G का value इतना small है. This is very, very, very small quantity. 6.67 into 10 to the minus 13. Okay, and mass of yours is approximately 60 or 70 kg, and the mass of your table is 100 kg. Distance between you is hardly 10 centimeter, whatever. So if you calculate the force, you'll find that the force is very, very, very small, very, very small. That is the reason you don't feel any force. But if you see, if you throw a ball upwards, it again comes back to the earth. Why? Because earth has a huge mass. Earth has a huge mass. So the force of attraction between earth and the ball you threw
is a very large force. Is a very large force. That's the reason the ball comes back to earth. Okay, because of the force exists. एक force रहता है ये सारे object के बीच में. So earth or the ball you threw, they also had a force. Okay, but the force is large enough to bring it back to the earth. Force is large enough. Large क्यों है? Because of earth's mass. Okay, so ये force बड़ा होना चाहिए. बड़े होने बड़ा अगर चाहते हो आप, so you have to take a big mass. Okay, big mass like earth, big mass like moon. Why moon is revolving around earth? Because of the gravitational force exists between them, and another force, centripetal force, comes into action, which revolves it around the earth. Okay, gravitational force, जो कि large force है, because of their large masses. Okay, I hope this is clear. Next, second question. So moving on to the next question. What are the differences between static and kinetic friction? This is a very nice question. Friction. What do you understand by friction? Friction क्या है? डे टू डे लाइफ में अगर आपने बॉक्स को पड़ा हुआ देखा ग्राउंड पे, and the ground is rough always, a smooth surface never exists practically. All so if you see an object lying on a rough surface, and if you try to pull or push the object, if it's a heavy object, heavy box you see lying on the ground, and you try to push the object, it will be difficult for you to push the object. But you are giving a force of any amount, 5 Newton or 10 Newton. But why you are unable to move the object? Why you are unable to move the object? It is because the object itself is giving an opposite and a parallel force. Opposite and a parallel force to the force you are giving. Okay, diagram करके बताता हूँ आपको. For example, this is an object, heavy object, and if you are giving a force F, okay, but it is not moving. Why? Because the object itself is also giving a force F, small f. Okay, ये भी कुछ extra force दे रहा है आपकी तरफ, parallelly and opposite. Okay, that is why it is not moving. अगर ये force exist ही नहीं करता तो आपके छूने से ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता, हाँ कि नहीं? बट ये मूव नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स एग्जिस्ट. दिस फोर्स इज नोन एज friction. Okay, I hope this is clear. I'll explain the friction in the book how it explains friction. Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, that is known as friction. Okay, friction matlab the force given by the body which opposes its motion, that is known as friction. So what is static and what is kinetic friction again? What is static friction and what is kinetic friction? So what is static friction is, static friction matlab the force of friction. The force of friction, the force of friction which comes to play before the body actually moves. Before the body actually moves. मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, if you are giving a force of F, ये ऑब्जेक्ट मूव होने से पहले जो फोर्स दे रहा है ऑपोजिट F small s, that is known as static friction. Okay, अगर आपको इस बॉडी को मूव करवाना है, if you want to move this body, you have to give a force which is larger than the static friction. Okay, अगर F is larger than the Fs, then only it will move. Okay, so static friction is जब ये बॉडी रेस्ट पे है तब जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ओके, तब जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑपोजिटली, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स दोगे बॉडी को, तभी ये मूव करना स्टार्ट करेगी. एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन?
Kinetic friction is if this body has mass m and if you are giving a force of F, okay, and this is a rough surface, guys, okay, तो इसका एक्सेलरेशन आप अगर निकालोगे तो F by m कभी नहीं होगा. तो F by m क्यों नहीं हो रहा? We are giving a force of m, F, and it has a mass of m. So if we calculate the acceleration, it should be F by m. Shouldn't it be? It should be. But it is not F by m. Why? Because the rough surface over which the body is moving, the rough surface also gives an opposite force, which is known as Fk or the kinetic friction. So kinetic friction का मतलब है the force of friction which acts when the body is moving. Okay, so इस पे नेट फोर्स क्या है? अगर काइनेटिक फोर्स ऑपोजिटली इधर लग रहा है तो नेट फोर्स इसका क्या है? F minus Fk. सो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे आप तो इसका नेट फोर्स में आपको क्या डालना पड़ेगा? कैपिटल F माइनस Fk बाई m. ओके, सो बुक में से आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. The force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts moving. Okay, static friction means, समझ लो अच्छे से, जब एक बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, जब वो स्टैटिक पोजीशन में, तब जो ये फोर्स देके अपने मोशन को अपोज कर रहा है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, एंड हमें अगर एक बॉडी को एक्चुअली मूव कराना है तो ऑलवेज वी हैव टू गिव ए फोर्स व्हिच इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, ऑब्वियसली है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिटली दे रहा है वो, तो उससे ज्यादा ही जब फोर्स देंगे तभी वो मूव करना स्टार्ट करेगा. ओके, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन दैट बॉडी इज एक्चुअली मूविंग. ओके, जब वो एक्चुअली मूव कर रहा है तब जो फोर्स होता है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन. So I hope it's clear what is say static friction and what is kinetic friction. So moving to the next question, can you explain the concept of SHM with example? This is the topic where so many people get confused and so many students find it is a very difficult topic to deal with. Actually, it is a little bit difficult topic. I would say yes, it is a little bit difficult topic, but you have to understand it thoroughly and proceed to the questions, because every year you will see in NEET, you'll get at least 2 questions from this topic SHM. Okay, so आप लोग ये टॉपिक्स अच्छे से यहाँ पे साथी प्लेटफॉर्म में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि there are so many people who are teaching over here. They had got a good rank and they are highly confident in those topics because they already have dealt with the topics, they have dealt with the conditions that you are going through currently. Okay, so आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, and then don't forget to practice questions, क्योंकि at the end the only thing that will fetch you a good mark and a good rank in NEET is questions. तो आप लोग थ्योरी पढ़ो यहाँ से अच्छे से, then questions करो. Per day I'd say set a target of 30 to 40 questions, that every day you will be solving 30 to 40 questions. हर दिन 30 to 40 questions करो. At the end you will see you will be very strong enough in physics. Physics is not a hard subject, it's a conceptual subject. If you are strong enough in your concept, definitely you are going to get a good mark, definitely, for sure. Okay, so concept देखने के बाद आप लोग don't forget to practice questions. Okay, question practice is the most important thing in physics. So coming to SHM, or today's 4th question, what is SHM? SHM is simple harmonic motion. So before explaining SHM, I would describe there are 2 types of motion. In physics, there are 2 types of motion. One is periodic motion
and another is non-periodic motion. So periodic motion का मतलब क्या है? Periodic motion means the motion repeats itself. The motion repeats itself. मतलब जो भी मोशन कर रहा है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा. That is periodic motion. For example, if you take a thread or rope and tie a stone over here and rotate it with your hand. Okay, so you are continuously doing the same motion, continuously going through the same state and going through the same motion. This is a periodic motion. नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या होगा? अगर ये एक बॉक्स है, आज बॉक्स को फोर्स से देखें यहाँ पे ले आए, so this motion is not repeating itself. एक बार फोर्स किया, यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट आ गया. This is non periodic motion. Periodic motion मतलब जो बार बार रिपीट होता है. For example, Earth revolving around sun is a periodic motion. Okay, there are so many examples. And another real life example is watch में सारे जो hour घंटा होता है, same repeats itself, motion repeat होता है, तो that is periodic motion. Then again, the periodic motion has two types: oscillating and non-oscillating. Okay, oscillating and non-oscillating. Oscillating का example क्या होगा? अगर for example यहाँ पे एक पेंडुलम है, पेंडुलम को यहाँ पे क्या फोर्स दिए, तो it will repeat its motion around a point x. If you take this point as x, it will repeat its motion around the point x. This is known as an oscillating motion. Okay, so oscillating motion में ही SHM आता है. SHM comes under oscillating motion. तो SHM का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को if an object is moving around its axis, if an object is continuously moving around a point, like this pendulum is moving around this point continuously, this is SHM, simple harmonic motion. Okay, और एक एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? If you tie a spring to the wall and attach an object of mass m and give a force of F, it will constantly, if you take this point as x, it will constantly move forward and backward, back and forth. It is constantly vibrating around the same point x. Okay, and this makes it as an example of SHM. Okay, so simple harmonic motion का basic definition क्या है? If an object is continuously moving around the same point, that is known as SHM. SHM का बहुत सारा example है. For example, this pendulum को अगर आप force देके छोड़ोगे तो it will move around the same point. This is an example of SHM. और एक example क्या है? Spring attached to a mass. और क्या एग्जांपल हो सकता है SHM का और क्या एग्जांपल? वॉच आप घर पे देख रहे हो, अगर वॉच के नीचे एक पेंडुलम होता है जो बार बार मूव कर रहा है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ SHM. So only to define the concept of SHM and examples, I have done that. I hope this is clear what is SHM. So moving forward to the next topic, next question: how do you calculate the period and frequency? How do you calculate the period and the frequency of oscillating object? Time period and frequency of an oscillating object. So इसको मैं बताने से पहले एक मैं एग्जांपल ले लूंगा जो मैं पहले दिया था. एक रोप है और यहाँ पे एक स्टोन अटैच्ड है जो कि रिवॉल्व कर रहा है. ओके, सो टाइम पीरियड का प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम पीरियड का मतलब होता है how much time the body takes,
listen to me clearly, guys. How much time the body takes to make an entire revolve, make an entire circle. Okay, that is known as time period here. मतलब इसको एक सर्किल घूमने के लिए इस पॉइंट से ए पॉइंट में था और फिर से ए पॉइंट में आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड को मैं अगर डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं, टाइम पीरियड इज द टाइम taken by the object to make one revolution. ओके, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. सो टाइम के पीरियड के लिए अगर आप लोग बोलोगे तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला गाइस. you there might be some of you must be knowing the formula. I uh, I will explain how it is derived. So time period का वो definition क्या है? Time taken by the object to make one revolution. So one revolution के लिए वो कितना एंगल मूव कर रहा है? The angle it is moving is 2 pi, and if it has an angular velocity of omega, for example, if it has an angular velocity of omega, so velocity है omega and it is making it is moving at an angle of 2 pi. So इसका time period कितना होगा? 2 pi एंगल के लिए कितना मूव, सॉरी 2 pi एंगल मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगेगा 2 पाई एंगल मूव करने के लिए? हम लोगों को क्या पता है? थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू थीटा बाय एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा. सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओके, देन कमिंग टू फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में टाइम पीरियड का कंप्लीटली अपोजिट. टाइम पीरियड का मतलब था उसको एक रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है. फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी revolutions the body is making in 1 second is frequency. फॉर एग्जाम्पल इस ये ऑब्जेक्ट को अगर एक राउंड घूमने में अगर 0.1 सेकेंड लग रहा होगा, एक राउंड घूमने में 0.1 सेकेंड लग रहा होगा, तो 0.1 सेकेंड हो गया इसका टाइम पीरियड. तो 0.1 सेकेंड में वो एक राउंड घूम रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितना राउंड करेगा? एक सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन. सो 10 रेवोल्यूशन विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी. ओके, सो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं हम लोग. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड. ओके, so here formula will be omega upon 2 pi, that is frequency. so इतना ही था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में. टाइम पीरियड मतलब फिर से बोल दे रहा हूँ, एक राउंड घूमने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड. और फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशन करे, दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज. हर्ट्ज ऑफ ऑल या फिर सेकेंड इनवर्स में हम लोग बोल सकते हैं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the difference between series and the parallel circuit, and can you describe its application, properties and application? Properties और application. Okay, so series और parallel circuit में बोल रहा हूँ. series and parallel circuit. series का मतलब होता है if you take a circuit and connect all the resistors serially, that is a series connection. ये सीरीज कनेक्शन है. देन पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या हुआ? इफ यू टेक ए सर्किट एंड कनेक्ट देम पैरेलली, पैरेलल टू ईच अदर, not on a straight line, you connect them like this, this is a parallel connection. This is a parallel connection. So ये एक ये है सीरीज, ये पैरेलल कनेक्शन. तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन? रिमेंबर दिस गाइस, if it is providing a voltage of V
and if they carry a resistance of R1, R2, R3, R1, R2, R3, okay, the current through all the registers in a series connection is same. अगर इसमें I करंट मूव हो रहा है तो और सारे रजिस्टर में I करंट ही मूव होगा. Okay, this is the property. I is same throughout. Okay, but यहाँ पे I is different. Parallel I1, I2, I3. I is variable. Okay, तो सीरीज एंड पैरेलल में एक डिफरेंस आपको पता चल गया. I यहाँ पे सेम होता है थ्रू आउट एंड I इज वेरिएबल थ्रू आउट. नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में? द वोल्टेज एट द एंड ऑफ ऑल द थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 इज डिफरेंट. यहाँ पे अगर V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3. The sum of all the voltage obviously will be V. This is a common sense for you guys. So current same होता है but voltage is different. V is different at all registers. Okay, but यहाँ पे voltage is same at the end of V ही होगा. voltage तीनों रजिस्टर के एंड पे वोल्टेज सेम ही होगा. V is same throughout. Okay, so application advantage and disadvantage पे मैं क्या बोल देता हूँ. सीरीज कनेक्शन में क्या क्या आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा? फर्स्ट एडवांटेज तो क्लियरली सीन है, I is same throughout. So और यहाँ पे वोल्टेज इज डिफरेंट एट ऑल द रजिस्टर. अगर आपको कि यहाँ कहीं पे थोड़ा अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमें अगर किसी रजिस्टर पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, मतलब जनरली डे टू डे लाइफ में दे लो, अगर आपको कहीं पे आयरन लगाना है जहाँ पे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एक अलग सर्किट, अलग वायर कनेक्शन देके और एक ज्यादा वोल्टेज ऐड कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज इज डिफरेंट थ्रू आउट. ओके, सीरीज कनेक्शन में ये एडवांटेज हुआ. और क्या एडवांटेज है? करंट सेम है थ्रू आउट. डिसएडवांटेज क्या होगा इसमें? डिसएडवांटेज होगा इफ किसी रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम है. डिसएडवांटेज इन सीरीज कनेक्शन है अगर किसी रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो पूरा कनेक्शन ही टूट जाएगा क्योंकि करंट ही पास नहीं होगा. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में क्या है प्रॉफिट, एडवांटेज? वोल्टेज दोनों एंड पे सेम होगा, इसीलिए all the component of the circuit will perform efficiently. सब कुछ अच्छे से efficiently चलेगा. ओके, डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पे? डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर हमें किसी रजिस्टर पे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम नहीं दे सकते. सारे रजिस्टर को हम सेम वोल्टेज पे ही चला सकते हैं. दैट इज द मेन डिफरेंस. ओके, सीरीज में एडवांटेज क्या था मैं लिख देता हूँ एक बार. सीरीज कनेक्शन में एडवांटेज क्या होता? I is same throughout. Second is it allows addition of a greater voltage. Disadvantage क्या होगा सीरीज कनेक्शन में? Disadvantage here is we if a single part has some problem, the whole circuit will be broken. ये मेन डिसएडवांटेज ये हो गया सीरीज का. पैरेलल में एडवांटेज क्या है? पैरेलल में एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स V सेम थ्रू आउट. और क्या वोल्टेज है? all the parts work efficiently because of the voltage, because voltage is same throughout. डिसएडवांटेज क्या होगा यहाँ पे? एडिशनल वोल्टेज ऐड नहीं कर सकते. नो additional voltage can be added. Okay, so I hope this is an easy question. That was an easy 10th level question. So moving to the next example, next question.
Question number 7, and this is a very important topic. Can you describe the behavior of waves, including diffraction, reflection, refraction, and interference? So all the 4 topics I'll describe very briefly, guys. So try to understand the things. First, I'll start with reflection and refraction. 1 minute topic. Reflection का मतलब क्या है? If a light is falling on any object, smooth or a rough object, and moves back to the same media. If it is coming from air, it again goes back to air. That is known as reflection. Okay, reflection matlab if a light is falling from a media on an object and again moves back or reflects back to the same media, that is known as reflection. Same media. This is important in the definition. Refraction क्या है? Refraction matlab if the light deviates its path, because it moves from one media to another. अगर ये एयर था और यहाँ पे वाटर है और ग्लास स्लैब है, कुछ भी, हाँ यहाँ पे एयर है और वाटर है, एयर water. So the light is coming and moves here. Okay, if it deviates from its path because it is moving from one media to another media, that is known as refraction. Different media. Okay, then coming to diffraction. Diffraction का proper definition क्या है? The diffraction is the phenomenon of bending of light. अगर फर्स्ट में समझा लेता हूँ क्या ये. आपने विंडो पे अगर देखा होगा, विंडो पे जब आप एजेस पे नोट करोगे, सेंटर पे नहीं, एजेस पे नोट करोगे, तो लाइट विल बी मूविंग, लाइट विल बी स्प्रेडिंग, लाइट विल बी डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ. Why it is happening? Because of diffraction. Diffraction is the phenomenon of bending of light around the corners and spreading of light within the geometrical shadow of opaque object. Okay, so diffraction मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखो, लाइट अगर आ रहा है, उसके कॉर्नर पे अगर आप नोटिस करोगे, तो लाइट विल बी डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ. दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. ओके, so diffraction is a very lengthy topic. I think you should learn it properly. Diffraction through a single slit. जैसे अगर छोटा स्लिट हुआ तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, अगर ये बड़ा स्लिट हुआ तो डिफ्रैक्शन कम होता है. डिफ्रैक्शन का मेन डेफिनेशन है जो बेंडिंग ऑफ लाइट देखोगे आप अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Okay, then comes interference. What is interference, guys? Interference are of two types. Constructive interference मतलब दो लाइट का मिलाव, दो लाइट वेव का मिलाव. Addition of two light waves is known as interference. Interference of दो टाइप का होता है, constructive and destructive. Constructive मतलब क्या? Addition of the two light waves. ऐसे था और एक ये था. अगर ये कॉन्स्ट्रक्टिव पाथ वेव हुआ, कॉन्स्ट्रक्टिव वेव था, तो दोनों को मिला के बड़ा वेव जनरेट होगा. ओके, डिस्ट्रक्टिव मतलब ये इससे माइनस हो जाएगा, you'll get a small wave. This is known as destructive interference. This is known as constructive interference. Okay, so this is all about interference, diffraction, reflection, and refraction. I only explained it very briefly, guys. Okay, so now coming to waves. How do you calculate the speed
frequency, wavelength, and amplitude of an wave. So we will start with the amplitude. If the wave is moving like this, what is amplitude, guys? Amplitude matlab, if this is the mean position of the wave, this is the mean position, okay? And amplitude का मतलब क्या होता है? Amplitude मतलब the maximum height above and below the mean position. This is amplitude. So amplitude मतलब the maximum height above and below. Maximum height above ये यहाँ पे क्या है? ये था, ये हो गया amplitude, ये हो गया amplitude. Okay, I hope this is clear. Amplitude मतलब maximum height wave का कितना है above and below the mean point. Okay, that is known as amplitude. Then again the wavelength. What do you understand by wavelength? Amplitude हो गया. Then coming to wavelength. Wavelength मतलब अगर ये एक ट्रांसवर्स वेव है, अगेन मैं वही वेव बना रहा हूँ, फिर ये ट्रांसवर्स वेव एक बना रहे हो आप. ट्रांसवर्स वेव में the length between two successive crest or trough is known as wavelength. Okay, अगर ये टू सक्सेसिव क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है. क्रेस्ट का मतलब मुझे आई होप यू गाइस नो, क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला पोर्शन, ट्रफ मतलब नीचे वाला पोर्शन फ्रॉम द मीन. क्रेस्ट ऊपर को बोलते हैं, ट्रफ नीचे को बोलते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट is known as lambda or wavelength. It is denoted by lambda. Okay, this is wavelength. Then coming to speed and frequency. First मैं frequency बोल देता हूँ. क्या होता है frequency? फ्रीक्वेंसी समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम पीरियड भी जानना चाहिए, तो मैं फर्स्ट टाइम पीरियड बोल देता हूँ. If these are the 2 points and if a wave have, okay, एक यहां से यहां तक आने को एक बोलते हैं वन वेव साइकिल. ओके, सो यहाँ पे कितना वेव साइकिल है? 3 वेव साइकिल. ओके, सो टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वेव साइकिल. वन वेव साइकिल के लिए टाइम टेकन is known as टाइम पीरियड. ओके, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में हाउ मेनी वेव साइकिल. ओके, द नंबर ऑफ वेव साइकिल मेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, टाइम पीरियड आप लोगों का भी क्लियर हो गया. ओके, तो टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करते थे हम? 2 पाई बाई ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा अपॉन 2 पाई. Okay, then comes speed. What is speed? Speed का मतलब हुआ angular velocity into time. Angular velocity into time is speed. Speed को हम लोग, speed के लिए यहाँ पे और एक टर्म को भी हम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए. वेव नंबर. Wave number is 1 by lambda. Speed is lambda into nu. Remember this formula. Speed is lambda into nu. Okay, wave number is not needed. Speed is lambda into nu. So clear हुआ आपका? Amplitude is the maximum height. Wavelength, the distance between two successive crest or trough. Frequency and time period. Time period मतलब the time taken by the wave to complete one wave cycle. Frequency is the time. In 1 second, how many wave cycles it is making? This frequency. Speed is lambda into nu. So coming to the next question, can you explain the concept of lens and mirror and how they form images? Okay, lens and mirror.
मिरर मतलब मिरर reflects light. Mirror reflects light and lens refracts light. Reflection, refraction मैंने बोल दिया था. Okay. So mirror में कैसे इमेज प्रोड्यूस होता है, लेंस पे कैसे प्रोड्यूस होता है देखते हैं. So for first, before describing that, I will explain how an image is formed. यहाँ पे अगर आप कनकेव मिरर ले लिया आपने, ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एफ, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम लोग इमेज कब प्रोड्यूस होता है, जब टू लाइट्स इमेज कब प्रोड्यूस होता है, जब two reflecting lights join with each other, two reflecting lights intersect with each other, it then only it will produce a image. Okay, जब भी दो लाइट, दो टू रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्शन में भी वैसे ही, अगर ये एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट था, जहां पे टू टू रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग लाइट्स where two reflecting or refracting lights join, it forms an image. Okay, so एक इमेज बनाने के लिए तो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग लाइट्स का ज्वाइन होना इज नेसेसरी. ओके, जहां पे भी जो भी पॉइंट पे ये लोग ज्वाइन होंगे वहां पे इमेज फॉर्म होगा. अगर ये ज्वाइन नहीं होंगे तो इमेज फॉर्म नहीं होगा. ओके, वी विल सी हाउ. सो इमेज फॉर्म होने के लिए कुछ रूल्स होता है, जैसे फॉर इन मिरर हाउ दे फॉर्म इमेज बोल दिया मैंने, जहां पे जो लाइट्स ज्वाइन होगा वहां पे लाइट फॉर्म होगा. If this concave mirror is focus this, and this is the center of its aperture. Remember this, guys. कुछ rules है. अगर if a light is moving parallelly to its axis, when it reflects, it will move through the focus. Okay, and if a light is moving through the center of aperture, it will reflect back again through the same path. And if a light is moving on the focus, it will move parallel to the line. Okay, these are the three rules you need to remember. और इसी से ही image formation हम लोग पढ़ते हैं. There are so many cases you have to learn about जहाँ पे जैसे कैसे image form होता है. Okay, same in lens. ये अगर एक convex lens है, if this is its focus, these are two focus, this is center of aperture. If a light is moving parallel to its axis, it will refract, it will move through the focus, and when it is moving through the focus, it will move parallelly. And when the light is moving through the center O, it will directly go, it will not deviate, it will go the same way, it will not deviate. These are the three rules for lens. These are the three rules in the lens and the mirror you need to remember. If it is moving parallelly, it will reflect back through the focus. If it is moving through the center of aperture, it will take again back the same pathway. And if it is moving through the focus, it will move parallelly to the axis. Okay, these are three rules you need to remember. And by using the three rules, you can form images. Okay, you can learn about the images. So moving to the next question, how does electricity flow in a circuit? How does electricity move in a circuit? To explain this, first I will take an example of a water tub. This is a water tub, and water is filled up to here. I'll explain the whole question here. And if this is a block, okay, and only this much portion is open, if water is moving like this, okay.
This is in a high potential zone. Here water was not there. Water is not there at all. Water is here. So it is a high potential zone. Okay. So how does electricity flows means? वाटर यहाँ से यहाँ ही मूव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था. वाटर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा. और अब देखोगे यहाँ पे जब ब्लॉक कम था यहाँ पे, तब वाटर फ्लो वाज लेस. वाटर फ्लो वाज लेस. बट जब ये रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो, जब आप रेजिस्टेंस पूरा कम कर रहे हो, तो ये फ्लो इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा था, मतलब यहाँ पे बस कम गैप दे रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहे हो, तो फ्लो कम था वाटर का. ओके. बट जब आप रेजिस्टेंस निकाल दिया पूरा, तो यहाँ पे फ्लो ज्यादा हो रहा है. ओके. सो दैट इज द एग्जैक्ट वे current flows, guys. Current, how it flows from the high potential area to low potential area. Okay. When the resistance is high in a circuit, current is low. When the resistance is low in a circuit, current is high. For example, if you take a circuit like this is the cell, this is the resistor. So how current flows is, if the electrons present over here repel the electron in a conductor. Conductor में बहुत सारे free electrons होंगे. So the free electrons are repelled by the negative terminal of the cell. So electron यहाँ से move होना start करते हैं. Okay, electrons यहाँ से move होना start करते हैं. Okay, so this is the way electricity flows. यहाँ पे अगर resistance high हुआ, तो high resistance दे रहे हो आप, flow होने में obstruct कर रहे हो आप, तो क्या होगा? Current flow less होगा. So these are the roles of voltage, current and resistance. Voltage, अगर voltage high है, यहाँ पे अगर energy ज्यादा है, potential energy इनका difference ज्यादा है, तो current fast flow होगा, पानी ज्यादा fast आएगा, इसका मतलब current ज्यादा fast होगा. ओके. एंड रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो फास्ट करंट हुआ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट स्लो. These are the three difference and this is the way electricity flows. Okay. So moving to the next example, how do you calculate power and energy consumption in an electrical device? So अगर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस रेजिस्टेंस आर है, पावर सप्लाई दिए हो आप भी, और करंट फ्लो हो रहा है आई. So there are some formulas you need to remember. Electrical energy is equal to VIT. VIT. Okay. And power is equal to, we always know power is equal to energy upon time. So T को अगर cancel कर दोगे, so it will be VI. Okay. And from Ohm's law we know V is equal to IR. So we can put this formula here and get energy is equal to I square R T. और भी एक फॉर्मूला है इसका, V square by R into T. Okay, ये सब अगर फॉर्मूले में पुट करोगे तो you can get its answer. Okay, ये था electrical energy and power. This is a very simple formulas you need to remember, and you should solve more and more questions from this topic, electrical energy and power, because many of the entrances give questions on this topic. Okay, so I am concluding the session here, this topic. I hope I made the topics which you were finding difficult. I made those topics clear for you. I made it easy for you. So thank you guys for listening. Thanks.